जय जगन्नाथ समस्त को आज गोटे नुआ भिडियो। तो आज आम एमएस एक्सेल केते गुडी सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर गुड़ा आलोचना करवा जहाँकि आपणकर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तो प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर ए डैश। तो एठारे हमर कौन हो ना, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर ए स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल इज ए, तो एमएस एक्सेल गोटे कौन ना, ऑप्शन ए रे अच्छी विंडोज बेस्ड वर्क प्रोसेसर पैकेज, ऑप्शन बी विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, ऑप्शन सी डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following software application would be the most appropriate of performing numerical and statistical calculation। तो जो न्यूमेरिकल एवं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में कहाँ व्यवहार होता है ना, ऑप्शन डी ऑप्शन सी स्प्रेडशीट व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रॉ एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। जो फॉर्म गुड़ाक यूज हुए ऑर्गेनाइज बिजनेस और डाटा पाई रॉ एवं कॉलम ताहा कहा द्वारा होता है, कहा द्वारा व्यवहृत होता है ना, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज आर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल गोटे कौन ना, लोटस 1 2 3, कोरेल क्वाट्रो प्रो, एप्पल नंबर्स। तो यहाँ आमर ऑप्शन डी हो राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस एबव, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द दिस। नेक्स्ट, which of the following was the first which of the first spreadsheet on a micro computer। तो गोटे स्प्रेडशीट प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कोटा ना, ऑप्शन 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 डी विजिकैल्क होची कौन फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन ए माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिकैल्क इज ए प्रोग्राम डेभलप बाय, जो ये विजिकैल्क प्रोग्राम रही है किए डेभलप करते ना, ऑप्शन बी डान ब्रैकलिन इन 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a popular DOS based स्प्रेडशीट पैकेज। तो डोस पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज कोटा, पॉपुलर कोटा लोटस 1 2 3 is the popular DOS based spreadsheet package। Next question, which of the following is the latest version of Excel। तो Excel रो latest version टा कोटा आपण समस्त जानि छंती, Excel 2013। Next, the file responsible for starting MS Excel is। तो को फाइल द्वारा MS Excel टा स्टार्ट होई थाए ना, ऑप्शन सी excel.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल कॉल्ड। तो एक्सेल डॉक्यूमेंट गुड़ाक जो स्टोर हुए से फाइल को आम कौन कही था, से फाइल को आम कौन कही था, जो एक्सेल डॉक्यूमेंट गुड़ाक कौन स्टोर हो रही था आम कौन कौन वर्कशीट बोली कही था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। वर्कबुक कोटा वर्कबुक गोटे कौन, वर्कबुक गोटे कौन, वर्कबुक इज ए वर्कशीट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वर्कबुक होची गोटे कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल गोटे डिफॉल्ट फाइल एमएस कोटा एक्सटेंशन, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल इज। तो एमएस एक्सेल गोटे डिफॉल्ट फाइल कोटा ना, ऑप्शन डी XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स क्रिएटेड विथ लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो यहाँ कौन हो आमर, ऑप्शन बी 1 2 3। नेक्स्ट, ए टेम्पलेट इज ए, गोटे टेम्पलेट कौन, गोटे टेम्पलेट को आम कौन कहवा, द पैटर्न ऑफ वर्कशीट, द पैटर्न ऑफ वर्कशीट। नेक्स्ट, considering output data to exhibit specific information is।
तो आमर कौनटा हो ऑप्शन सी समराइजिंग। नेक्स्ट इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम द कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट। तो वर्कशीट तुम डॉक्यूमेंट कौन रिलेटेड करे ना ऑप्शन ए वर्कबुक कंटेंट रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इन MS Excel each sheet is in a workbook is displayed as तो हमारा कौन है ऑप्शन ए इज टैब in MS Excel each sheet in a workbook is displayed as। next in order to move from the one worksheet to another in MS Excel workbook one should click। तो এটা कहा द्वारा आम क्लिक कर था ना सीट टैब को क्लिक कर हमारा मिली थाए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।